Namaskar. We would like to welcome you all on AYUSH Samriddhi's 1212 milestone of knowledge of journey of knowledge, journey of sincere sharing of their thoughts, concept and vision regarding each and every topic related to health, awareness, ecosystem, culture, religion, everything. So thank you very much for joining again. In these cold days, really I'm guilty feeling myself that I am disturbing you from your bed every night, and every night we are meeting to share our knowledge and wisdom on this platform. We are really grateful to you. Thank you very much. I would like to welcome Dr. Sakat Kumar Basu and Dr. Suparna Sanyal Mukherjee ji. I hope both have joined. Yes, both have joined. And our respected Professor V.K. Agnihotri sir and Professor Lakshmikant Dwivedi sir, along with our Nishant Shukla ji and સરસ મારે સાબુદાણાની ખીચડી अरे અને वाह ભાઈને એના મામાના જન્મદિવસની बड़ा अच्छी चीज आई फलारी फलारी चीज आ गई सामने साबुदाने की खिचड़ी आ गई सर थैंक यू तो मैं आदरणीय अग्निहोत्री सर से देखिए सब्जेक्ट बड़ा टिपिकल है लोगों का इंटरेस्ट कितना है नहीं जानते लेकिन चूंकि हम लोग शैकत जी ने बड़ी प्रेरणा दी मैं डॉक्टर शैकत बसु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस सब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर हमें प्रेरणा दी अदरवाइज ये सब्जेक्ट ऐसा टिपिकल है कि आज ये चीज बढ़ती जा रही ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ती जा रही और इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बढ़ते हुए अत्याचार लूट खसोट कई तरह के गुनाह क्राइम्स इससे जुड़े हुए हैं मैं आदरणीय अग्निहोत्री सर से प्रार्थना करूंगा कि हम सब लोग समाज को अवेयर करें कि वो अलर्ट रहे स्टॉप टू अलर्ट मैंने इसीलिए टॉपिक रखा बी अलर्ट टू स्टॉप ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिस्पेक्टेड अग्निहोत्री सर थैंक यू नमस्कार प्रोफेसर वंश शर्मा जी बहुत बहुत नमस्कार आपको सब हमारे आज की इस वेबिनार के जो अतिथि वक्ता लोग हैं उनका बहुत बहुत सादर स्वागत है और जैसे कि आपने कहा जो आज का टॉपिक है निश्चित रूप से वो हर ह्यूमन के लिए हर प्राणी के लिए देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके जीवन के लिए उसकी लाइफ के लिए क्योंकि अगर हम अलर्ट रहते हैं तो बहुत कुछ अपने जीवन को बचा सकते हैं अलर्टनेस से और जरा सा भी हम रिलेक्टेंट हैं या लापरवाह होते हैं तो उसका परिणाम फिर नुकसान का या हानि का ही होता है और ऐसी स्थिति में समय समय पर राज्य सरकारें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या दूसरे तीसरे सभी लोग इस बात को अलर्ट रखते हैं इवन रेलवेज पर स्टेशन पर बस अड्डों पर सभी कुछ ऐसी बहुत सारी वार्निंग या अलर्टनेस के स्लोगन लिखे रहते हैं अनाउंसमेंट भी होते रहते हैं और अपनी खुद की जो हमारी चेतना है इसके जरिए हम ठीक से सड़क पर चले ठीक से हम अलर्ट होकर चलें और देखें कि हम किसी से ना टकराए कोई हमसे ना टकराए कोई मेरे बहुत करीब ना आ जाए क्योंकि फॉरेन वगैरह में इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कीप डिस्टेंस का जो फॉर्मूला वो इतना सही रहेगा उतना वो तभी सही रह पाएगा जब हम अलर्ट रहेंगे और बहुत टेक्निकल चीजें भी हैं कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अगर हम अलर्ट नहीं रहते हैं तो आज हमारे अतिथि वक्ता हमारे अल्बर्टा से जुड़े हुए हैं हमारे डॉक्टर साकत कुमार बसु जी बहुत ही फ्लुएंट स्पीकर हैं और बहुत ही मतलब उनका सेंटेंस उन्हीं को हम कह रहे हैं इट इज ऑलवेज अ प्लेजर फॉर मी टू ज्वाइन योर IRES प्लेटफॉर्म तो वो उनका जो प्लेजर मेरे को मतलब बहुत खुश कर देता है कि वो कितने ईगरली हम लोगों को न केवल रिसीव करते हैं बल्कि अपने थॉट से हमको मैंने बहुत ज्यादा एनलाइटन करते हैं तो मैं उन्हीं का सेंटेंस मुझे अच्छा लगा और साथ में हमारे संग जो आज की दूसरी वक्ता रहेंगे डॉक्टर सुपर्णा सन्याल मुखर्जी है इक्वली गुड उनका भी ये रहता है कि उन्होंने इतना कोऑपरेट कर दिया है कि अब शायद जो
जो एडवर्समेंट ऑफ टाइमिंग है उनकी, वो भी ओवरलुक कर जाती है कि अगर जुड़ना है, स्पीच देनी है तो पूरा पूरा डेडिकेशन के साथ देते हैं। हम आप दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा वेलकम करते हैं, इंडेटेड फील करते हैं कि आप लोगों को एनलाइटन करते हैं और नए नए थॉट के साथ में, और आपकी अवेयरनेस की साउंड बहुत दूर तक जाती है। सच्चाई ये है कि जितने इम्प्रेसिवली आप बताते हैं उसका हर कोई आज देख ले तो भी ठीक है, वीडियो विजिट करते हैं तो भी उनको एक थॉटफुल एक इंफॉर्मेशन मिलती है। सो वी अगेन वेलकम यू ऑल फॉर योर काइंड प्रेजेंस, एंड वी आर going to learn and enhance our knowledge to this subject, especially the human trafficking. So thank you so much, and we welcome again and again. Namaskar. Over to नमस्कार Professor नमस्कार, Samriddhi. थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद Welcome. धन्यवाद। आई एम वंस अगेन, इट्स अ प्लेजर टू जॉइन यू। आज मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश कंबाइन करके जरूर, मेरा ये जरूर। प्रेजेंटेशन देना चाहूंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है, मैं धन्यवाद देता हूँ शर्मा जी को कि बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, बट ये एक इतना संवेदनशील, इतना इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, और हम हर कोई गवर्नमेंट, हर कोई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या इंटरनेशनल कोई भी गवर्नमेंट है, हम इसे नकारा करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, ये हो रहा है और हमारे पास में ही हो रहा है, हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं। लाइक दिस इज सच अ सीरियस इशू। और एक डिस्क्लेमर है मेरा कि मैं कोई सोशियोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं कोई सोशल साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं तो एग्रीकल्चरल के लोग आदमी हूं या एनवायरमेंट के बंदा हूं, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर हाईलाइट करना ये चाहता हूं एज अ ऑर्डिनरी ग्लोबल सिटीजन। इसके अवेयरनेस के लिए हर दिन हम लोग न्यूज़पेपर, टेलीविजन या हमारे एफएम रेडियोज वगैरह हर जगह ये हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन हम इसे अनदेखा कर रहे हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं, और ये एक भयानक फॉर्म ले रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सिर्फ भारत का प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे दुनिया में हो रहा है। कैसे कि जापान जैसा, इटली जैसा, जर्मनी जैसा, यूके जैसा, यूएसए जैसा पावरफुल G7 कंट्री में भी ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है। तो मेरा हाईलाइट जो है ये अवेयरनेस करने के लिए है। कुछ शब्द मुझे यूज करने पड़ेंगे, थोड़ा शॉकिंग होगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन ये शॉक हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हमें जानना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, और ये एक डिवास्टेटिंग पार्ट हो रहा है। मुझे कुछ मिथ बास्टिंग करना है। जैसे हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बात करते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब लड़कियों और यंग गर्ल्स का ट्रैफिकिंग हो रहा है। ये करेक्ट नहीं है। ट्रैफिकिंग यंग लड़कियों की हो रहा है, सौदा यंग लड़कियों की हो रहा है, सौदा बच्चों की हो रहा है, वेदर बॉय और गर्ल, सौदा एडल्ट मेन के भी हो रहे हैं, जिसे हमको पता नहीं है। मेन कैसे उसको, लाइक लड़की हम समझ सकते हैं कि दिस इज गोइंग इनटू प्रोस्टिट्यूशन और सेक्स ट्रेड और वगैरह वगैरह। बच्चे के लिए इलीगल अडॉप्शंस हो रहे हैं। बहुत सारे कंट्रीज है वेस्टर्न कंट्रीज में जहां पर लोग लीगल प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन में नहीं जाना चाहते हैं। उसका रीजन क्या है कि ये लोग, आप जानते हैं कि हर वेस्टर्न कंट्रीज में थोड़ा पॉपुलेशन डिक्लाइन दिख रहा है, और ये लोग बहुत सारे उम्मीदों के बाद, इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स वगैरह के बाद, ये इतना एक्सपेंसिव है, इन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के बाद बहुत वेस्टर्न कपल्स है जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, एंड देन दे वांट अ बेबी। और इसका इजी एक्सेस कहां से उसे मिलता है? ये डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, उसमें इंडिया भी शामिल है। और क्यों ये लीगल प्रोसेस जो है गवर्नमेंट के एडॉप्शन करने के लिए ले ही जाना चाहते हैं? क्योंकि इट्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोसेस, उसमें बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन होता है, आपको बहुत सारे पेपर या डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है। ये सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोसेस के अंदर से नहीं जाना चाहता है, वो बहुत खराब है। सो व्हाट दे डू, दे गो थ्रू एजेंट्स, they go to illegal agents who are responsible for trafficking children from one country into another, and then they are illegally adopted. फिर सोचिए, अडॉप्शन एक छोटी बच्ची का या बच्चे का हुआ किसी दूसरे कंट्री में, फिर भी ये अडॉप्शन वो लोग बच्चे को पालने के लिए कर रहा है, फिर भी उसका ये इलीगल है, फिर भी ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लेकिन सेक्स ट्रेड में जो लड़कियां जा रही है, वो उससे बच्ची से लेकर, टीनेज बच्ची से लेकर, उसका कोई एज नहीं होता है, लाइक इट कुड बी एनी एज ऑफ द गर्ल्स दैट इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड। और ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, चाहे वो एशियन कोई कंट्रीज में हो, जहां पर भी गुर्बत है, जहां पर भी पॉवर्टी है, दीज एजेंट्स, दीज पीपल एक्सप्लॉइट द सिस्टम। देन पुलिस कहिए कि हमारे
सिक्योरिटी कहिए, ये जहाज की तरह जाइए कि रोड ट्रांसपोर्ट कीजिए, जैसे वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग होता है ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग एनिमल्स की तरह किया जाता है। शिपिंग कंटेनर्स के अंदर लड़कियों बच्चों को भर भर के एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक लिया जा रहा है। कभी कभी ये पकड़े जाते हैं, कभी कभी ये नहीं पकड़े जाते हैं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लड़कियां ऑन द वे सफोकेशन, डिहाइड्रेशन, मैलन्यूट्रिशन के कारण मर जाते हैं। नो वन केयर्स। और ईस्टर्न यूरोप, जैसे हम तो सोचते हैं कि ये सारे गुर्बत वाली जो कंट्री है, मतलब एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में ये हो रहा है, नहीं। ये ईस्टर्न यूरोप के पुअर कंट्रीज जो है, सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद बहुत सारे कंट्रीज जो कम्युनिस्ट रूल से निकलकर ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरह मर्ज मूव किया है, इन सभी की इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम बड़ा डिस्टेबलाइज्ड है। इस कंट्री में रोमानिया, बुल्गारिया से लेकर और भी जो फॉर्मर यूगोस्लाविया के जो डिसरप्टेड कंट्रीज है, जहां पर बॉस्नियन वॉर वगैरह हुआ था, ये सारे अनस्टेबल कंट्रीज, इसमें इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट जर्मनी, फ्रांस, यूके या पोर्तुगल, इटाली के जैसा नहीं है। वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ह्यूज है। तो ये सब पुअर कंट्रीज से ये बच्चे हैं, लड़कियां हैं, इसे सारे जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नॉट जस्ट ओनली अफ्रीका, नॉट जस्ट ओनली एशिया और लैटिन अमेरिका, ईस्टर्न यूरोप से भी ये सारे कहां जा रहे हैं? रिच कंट्रीज में जा रहे हैं या वेस्टर्न कंट्रीज में जा रहे हैं, एंड दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। क्या इन लोगों के सरकार इसके बारे में अवेयर नहीं है? अवेयर है, लेकिन हर जगह जैसे एक सिस्टम ऑपरेट करता है, और ये सिस्टम को डिसरप्ट करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पावरफुल लोग, बहुत सारे ताकतवर लोग इस सिस्टम्स को ऑपरेट करते हैं, और इसमें मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर का खिलवाड़ चलता है। तो ये एक ह्यूमैनिटी के लिए एक शेम है कि आज हम 2024 पर आ गए हैं, फिर भी हम वो हमारे जो स्लेव ट्रेड था, वैसे ही हम लोग वही ट्रेड आज भी चल रहा है, और सारे G7 कंट्रीज में ये चल रहा है। सरकार सभी को मालूम है, लेकिन एवरीवन इज हेल्पलेस, दे आर नॉट बीइंग एबल टू क्रैक डाउन। दिस इज सच अ पावरफुल सिस्टम। इन लोगों के इतने सारे कनेक्शंस, बॉर्डर में, ट्रांजिट पॉइंट्स में, इंटरसेक्शंस में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री अगर आप कुछ करना चाहे तो आपको पकड़ लिया जाएगा, आपको बॉर्डर में रोक दिया जाएगा। क्या ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि ये सारे इलीगल इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो रहा है? हेल्पलेस, पॉवर्टी स्टिकन पीपल, जहां पर क्या हो रहा है कि ये लोग, ये लड़कियों को कभी कभी ये उठाकर नहीं लाते हैं, देयर पेरेंट्स आर सेलिंग देम बिकॉज द पॉवर्टी इज सो एब्जेक्ट, दे हैव नथिंग टू ईट। तो ये लोग इतना, मतलब गुर्बत में इतना बुरी तरह फंसा है, इन लोगों के जियोपॉलिटिकल सिस्टम्स इतना खराब है दैट पेरेंट्स आर सेलिंग देयर किड्स, पेरेंट्स आर गिविंग देम टू द एजेंट्स, एंड दीज एजेंट्स आर ट्रांसपोर्टिंग देम टू। इस पर बहुत सारे हॉलीवुड के मूवी, बॉलीवुड के मूवी या दूसरे कंट्रीज पर हुआ है। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इसके बारे में बहुत सारे डिक्लेरेशंस वगैरह निकल के रखे हैं। आजकल कुछ कुछ बच्चे को, कुछ कुछ लड़कियों को ऐसे जगह से रिट्रीव तो किया गया है, लेकिन देखा जाए तो ये कंटिन्यूअसली हो रहा है। कहां कहां से? अगर हम इफ वी लुक इनटू साउथ एशिया, वेयर आर दीज हैपनिंग? These are happening in Pakistan, these are happening in Afghanistan, India, this is happening in our neighboring Bangladesh. I do not have enough data from Sri Lanka, उसके बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन नेपाल से बहुत सारे हो रहे हैं। लेकिन देखिए, उसी हमारे बीच एक कंट्री है भूटान से, उधर से एक भी इलीगल ट्रैफिकिंग का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। कोई भूटान से गुर्बत के कारण दूसरे कंट्री में इलीगली इमिग्रेट कर रहा है, दिस इज अ डिफरेंट इश्यू, लेकिन इलीगल ट्रैफिकिंग वहां नहीं है, क्योंकि भूटान के जनरल इकोनॉमी और उसके पॉपुलेशन जो है वो सस्टेन कर सकता है। देखिए, जहां पर भी गुर्बत हो रहा है, नेपाल इज एक्सट्रीमली पुअर। हमारे इंडिया के बहुत सारे जगह है, जैसे हम जिस स्टेट से है, वेस्ट बंगाल, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ एंड 24 परगनास, जो पर्टिकुलरली साउथ 24 परगना, जो सुंदरबन एडजॉइनिंग रीजन है, वहां से लड़कियां वैनिश हो रहे हैं, यंग लड़कीज वैनिश हो रहे हैं, यंग बच्चे वैनिश हो रहे हैं। पहले तो हम लोग ये सोचते थे कि बाहर से लोग आ रहे हैं, उसे एब्डक्ट कर रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं, बाहर जाके सेल कर रहे हैं, ये लड़कियों को मिडिल ईस्ट भेज दिया जा रहा है, चाइना भेज दिया जा रहा है, ये लड़कियों को वेस्टर्न कंट्रीज तक भेज दिया जा रहा है। और इसका एक्सप्लॉयटेशन का प्रोसेस अगर देखा जाए कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस इन ह्यूमन,
हम इसे डिस्कस भी नहीं कर सकते इस प्लेटफॉर्म में। इनह्यूमन टॉर्चर दे आर बीइंग एक्सपोज टू, इनह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन दैट दे आर बीइंग एक्सप्लॉयड टू। हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज को देखे, मतलब जहां पर भी सरकारी प्रोटेक्शन नहीं है, जहां पर भी पुलिस मिलिट्री का मॉनिटरिंग वगैरह नहीं है, दीज आर रैम्पेंट एरिया। और भारत से ये कहां कहां पर हो रहे हैं? हमारे ओपन सी रूट्स जहां पर भी है, पर्टिकुलरली मुंबई से लेकर हमारा वेस्ट कोस्ट से जो भी जहाज मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, इसमें ये सारे तस्करी हो रहे हैं ह्यूमन के। और कहाँ है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि भारत और म्यांमार, भारत और बर्मा की जो बॉर्डर है, इट इज वन ऑफ द डेडली बॉर्डर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग नथिंग टू सिक्योर दिस बॉर्डर, बोथ फॉर सिक्योरिटी पर्पस, बोथ फॉर द मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट, बोथ फॉर द मूवमेंट ऑफ लाइफ ट्रैफिकिंग। ये खुली आर्म्स, खुली सड़क है जहां पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। लाइक इससे तो हमारे इंडियो पाकिस्तान बॉर्डर इज वे मोर सिक्योर्ड, लेकिन इंडो बर्मा बॉर्डर इज पोरस, द हाईएस्ट पोरस बॉर्डर अगर कहीं पर भी है, यहां पर हो रहा है। हमारे नेबरिंग म्यांमार में आप देखिए, जहां पर रोहिंग्या के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो बांग्लादेश में आकर रिफ्यूजी बने चुके हैं, उधर से हजारों लड़कियों रात के अंधेरे में थ्रू द कोस्ट लाइन्स, इंडोनेशिया, मलेशिया से लेकर कहीं कहीं पर, थाईलैंड से लेकर कहीं कहीं पर सेक्स ट्रेड में इसे एम्प्लॉय कर रहे हैं। ये चीन से लेकर हर जगह ये लोग स्प्रेड कर रहे हैं। There is no control, there is no restriction. The police is involved, the border security forces are involved, politicians are involved, and even more than that, highly powerful, politically powerful people are social involved. platform, we should not blame anybody. हाँ, We नहीं, should सब not तो blame महान है, हम सभी को नमन करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन अपकर्म जो हो रहा है उसके लिए तो हम उसके स्वर्ग के पास तो नहीं भेज सकते हैं। एवरीवन हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए पवन जी आप भी रिस्पॉन्सिबल है, हम भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम कभी भी इसके ऊपर आवाज नहीं उठाना चाहते हैं। और ये जो एक्सप्लॉयटेशन है, ये सबसे बड़ा एक्सप्लॉयटेशन पुअर पीपल नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों के पास अनरेस्ट्रिक्टेड मनी है, वही दूसरे गरीबों को ऊपर अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। तो इसीलिए हमें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें फिंगर पॉइंट करना चाहिए कि हम भी, वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस बाय कीपिंग साइलेंट बट नॉट सेइंग एनीथिंग बट नेवर रेजिंग आवर वॉइस। वी आर फॉलोइंग एंड हेल्पिंग दिस ट्रेड टू प्रॉस्पर। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के लड़कियां ऐसे वैनिश नहीं हो रहा है। कल अगर ये आपके साथ हो जाए या आपके कोई रिलेटिव के साथ हो जाए, तब आप ये प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं कहेंगे। आप ग्वालियर पे हो या कलकत्ता में हो या कनाडा में हो या लेदब्रिज में हो, आप जाके गुहारे लगाएंगे उसे पुलिस स्टेशन पर। क्या होगा? आप एक दरखास्त करेंगे, आपको डेट दिया जाएगा, और हर जगह, इवन इन डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, ये बच्चे को ये लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, बड़े बड़े कंट्रीज ये इसमें फेल कर रहे हैं। आज अगर आप इंडियन सर्कस में आप जाइए तो आपको देखने को मिलेगा कि मंगोलिया से लड़की लोग आकर काम कर रहा है, रशिया यूक्रेन से आकर लड़की लोग काम कर रहा है। ये तो सिर्फ एक सर्कस है। अगर इस ट्रेड के अब डीप अंडर देखें तो देखेंगे बाहर से कितने फॉरेन लड़की हमारे कंट्रीज में भी आ रहा है, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है अनरेस्ट्रिक्टेड, सरकार के सामने हो रहा है। राज्य सरकार हो, केंद्रीय सरकार हो, सभी को लज्जित होना चाहिए, क्योंकि इट इज अ शेम फॉर ह्यूमैनिटी। अगर हम इसके ऊपर आवाज नहीं उठाएंगे तो कब आवाज उठाएंगे? घर पे बैठे रहेंगे और देखते रहेंगे कि ऐसा हो रहा है। सो इट इज अ वेरी shameful event that is happening around the world. People are taking the opportunity of abject poverty and exploiting people who have no voice. ये रिच फैमिली के साथ कभी नहीं होगा, ये उसी के साथ होगा those who are suffering from abject poverty, rural areas, underdeveloped districts, जहां पर ना तेल है, ना खाने के लिए फूड है, ना रिसोर्सेस है, ना पानी है, ना कुछ है इन लोगों के बचने के लिए। तो ये लोग क्या करेंगे? तो ये कोई एक गवर्नमेंट की बात नहीं है। Unless the whole world comes together, they work together on a common platform, it is impossible to regulate and restrict this. And many countries under the table support this trade because they are getting unlimited money from this trade, and everyone benefits. So no one puts the finger. लेकिन अगर हम अपने ह्यूमैनिटी की तरफ देखें तो ये कोई स्लेव ट्रेड से कुछ कम नहीं है। हम लोग 200 साल पहले स्लेव ट्रेड को देखकर कहते थे कि देखो ये कैसे है, ये लोग स्लेव ट्रेड को प्रमोट किया था, कैसे एक्सप्लॉइट किया गया था। हम भी वो आज वही कर रहे हैं,
We are no different from our predecessors in supporting this system. So this is my awareness. मैं सभी को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, जहां पर भी आप ऐसे कांड या घटना देखें, इसे रिपोर्ट करें, पेपर में लिखे, मैगजीन में रिपोर्ट करें। अगर आपके पास क्षमता हो तो पुलिस को जनाए, कोई एनजीओ है उसे इन्फॉर्म करें और हेल्प करे इस अनफॉर्चुनेट पीपल को जो हर दिन हर टाइम हमारे सोसाइटी से वैनिश हो रहा है। थैंक यू वेरी मच. I really appreciate that once again that you have raised this issue on this platform. We have zero awareness about this in every country. We need to be shocking to know what is going on around us in this world. Thank you very much, and once again appreciate you for giving me this opportunity. Thank you, thank you. We are meeting tomorrow also. Excellent, Dr. Sekat. I appreciate your boldness and daring. Really, I appreciate. I appreciate on social platform also. I am in agreement with your vision, and that's why I mentioned the topic be alert, because we have to be alert. We can't change the system, but we have to change ourselves, and we have to observe the circumstances and surroundings carefully, so we can check this at right time before crossing the border. This is my humble request. एकदम Everybody, every citizen has to be Everybody. bold enough देखिए to किसी stop it. महान लाइक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, लाइक जब ज्यूस के ऊपर इतना परसिक्यूशन हो रहा था, इसके ऊपर इतना एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, कितने होलोकॉस्ट में मारे गए, तो एक बंदा, एक बड़ा सा बंदा, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं, लेकिन उसने ये कहा है कि आज देख रहे हो कि ज्यूस को ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कल देखोगे कोई दूसरे कंट्री के लोग को ये एक्सप्लॉइट करेंगे, लेकिन इफ यू डू नॉट प्रोटेस्ट you will see they are knocking at your door. Your daughter will be in the line next time. What will you do then? तो इसीलिए आवाज उठाना चाहिए. यूक्रेन देख लो, गाजा देख लो, क्या हो रहा है? मार्केट हो गई. हर वर्ल्ड अफ्रीकन कंट्रीज में तो ये रैम्पेंट हो रहा है. इंडिया के तो बात ही छोड़ दीजिए. मतलब कब से ये हो रहा है, ये एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है कि हर किसी को जागरूक होना चाहिए, नहीं तो कल तुम्हारे साथ भी ये होने वाला है. If you do not protest today, this is going to happen in your family tomorrow. ये जो डंकी पिक्चर आई उसमें तो यही था सब कुछ. शाहरुख खान की जो मूवी आई. हाँ, ठीक बताया आपने. ठीक. हाँ, डंकी की तो स्टोरी ही है. यही है. थैंक यू सर. थैंक यू प्रोफेसर पवन शर्मा जी. थैंक यू डॉक्टर सेकट जी. आपने बिफोर स्टार्टिंग योर टॉक यू ऑलरेडी अलर्ट अस दैट देयर मे बी समथिंग which may be tolerable or not tolerable, and that really became a point. You told that we have zero awareness. ये बिल्कुल फैक्ट है कि हम लोगों को अपने पर नहीं हो रहा है इसलिए इंडिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे रखा कि बी अलर्ट, जो टॉपिक रखा है, बी अलर्ट तो होना ही पड़ेगा. हाँ, बी इन्वॉल्व और वी हैव टू टेक एक्शन और स्टेप, वो थोड़ा दूर का विषय है, क्योंकि जैसे आपने कहा अगर हम मौन रहते हैं तो इसका मतलब हम भी उतने ही मतलब ऑफेंस में शामिल हैं और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे हैं. ये निश्चित रूप से शहरी लाइफ में ये होता है. सामने कोई बात होती है तो आदमी अवॉइड करके निकल जाता है कहीं हम ना फंस जाए, लेकिन ये जब अपने ऊपर आती तो इंतजार करते हैं 4 लोग मेरे लिए सपोर्ट पर आ जाए. तो वो चीज बिल्कुल सही है. जब तक हम सुरक्षित जीवन जी रहे हैं या सुरक्षित एरिया में रह रहे हैं तब तक चीज अलग है, और जब हम दूसरे संग घटना घटित हुई देखते हैं तो लगता है कि हाँ कल को कहीं हमारे साथ ना घट जाए. आपने बहुत ही अच्छे से अलर्ट किया हम लोगों को, और पॉइंट भी आपकी टॉपिक का यही था कि हम किस सीमा तक चुप रह सकते हैं और उसका कब हमारे लिए अलर्ट होने का टाइम आएगा. एंड स्पेशली जो कैपेबल है लाइक गवर्नमेंट्स, वो कुछ आगे आती हैं तो नेचुरली हम उनके नियम को फॉलो करते ही हैं, बीइंग ए गुड रॉयल सिटीजन. तो वो उसमें हमारा सपोर्ट रहेगा. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने बहुत ही पॉइंट, बहुत मार्वलस पॉइंट रहा. कई बार किडनैपिंग या दूसरी चीजें हमारी सोसाइटी में हो जाती हैं, स्कूल में बच्चा छूट जाता है या बस में छूट जाता है, नहीं मिलता है, तो वही क्योस की सिचुएशन बन जाती है. ये अलग बात है, घंटे 2 घंटे मिल जाता है, लेकिन उस वक्त पेरेंट्स के प्राण गले में आ जाते हैं कि कहाँ गया. तो बहुत सी ऐसी सिचुएशन जो है जो अनफॉर्चुनेट हो जाती है, और ये तो बहुत बड़ी बात होगी जी. छोटे बच्चों को भी इसके लिए स्कूल में अवेयर करना चाहिए कि स्ट्रेंजर से वो बात ना करे. ये हम लोग इतना सेंसिटिव करके इसे साइडलाइन कर रहे हैं, बट दिस इज स्प्रेडिंग लाइक अ वाइल्ड फायर अक्रॉस द वर्ल्ड. एवरीवन हैज टू बी अवेयर, एवरी फैमिली हैज टू बी अवेयर. थैंक यू. आप जानते हैं कुंभ के महीनों में, कुंभ के दिनों में अक्सर या किसी मेले पे कम से कम हर समय अनाउंस होता रहता है कि फला ड्रेस पहने हुए ये गायब है,
या ये Right, लेडी right, मिस हो right. गई, या ये फैमिली से मिस हो गई है, और उसमें एट द टाइम ऑफ द एंड ऑफ द डे पता लगा 20-30 लोग मिस हो रहे हैं। अब मिस हो रहे हैं, लॉस्ट एंड फाउंड में मिल भी जाते हैं, नहीं तो एक क्राइसिस बनी थी। तो हम लोग तो जो पुलिस होती है ड्यूरिंग कुंभ मेला, बहुत ही ये चिंता का विषय रहता है कि बाहर के लोग आते हैं, गली कूचे नहीं मालूम होते हैं, और सिस्टम हमारे जो होता है कि बैरिकेडिंग कर देते हैं जिगजैग मैनर में, जहाँ लड़की पड़ी के डिस्टेंस 3 किलोमीटर वो 12 किलोमीटर चलवा देते हैं। तो उसमें कई बार बीच रास्ते में बच्चे या लेडीज या कोई भी जो इधर उधर हो जाती है, बहुत क्राइसिस हो जाती है। तब ये बड़ी संभावना खुलती है कि दे कैन बी टेकन, अदरवाइज कुछ भी संभव है। तो हम एकदम लोग एकदम। जी, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओवर टू पवन शर्मा जी, आप म्यूट है सर। थैंक यू सर। मैं रुक जा, होल्ड कर। मैं डॉक्टर सुपर्णा सान्याल मुखर्जी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर सुपर्णा सान्याल मुखर्जी मैडम। वेलकम। Thank you very much. First, Happy New Year to all the dignitaries who are present here. This is the first webinar we are attending in this new year 2024. So today's topic is very controversial and interesting. So human trafficking, the today's topic I am just exploring on the topic of human trafficking, a social solitude in the context of wilderness. First of all, we have to understand what is we know the human trafficking, but in the definition wise, what is human trafficking? Human trafficking is the recruiting, then the transportation, transfer, laboring, or receipt of people through force, fraud, or depiction with the aim of exploiting them in the outer side. So even definition, United Nations also gives us some idea on the human trafficking as the recruiting, transfer, transform, then the receipt of people through force, then labor, as of abuse of power of, then of a position of vulnerability or of the giving or receiving of. So there are several types of human trafficking. In the process of human trafficking, we know that which is the human trafficking in persons, human trafficking as the bonded labor, then date bondage, and involuntary solitude among the people at large, then the migrational human trafficking, then the involuntary human trafficking, the forced human trafficking, the child soldiers, then the sex trafficking, then the prostitution, children eradication, the children exploitation, and the commercial sex. These are the main aspects of the human trafficking, what is happening all over the world. The most important stages of human trafficking is the luring first, then the grooming and gaming, then the coercion and the manipulation, then the exploitation, and lastly, and we can say that the recruiting. It has been also noticed, especially in 28th December 2023, in Mexico, there is a human trafficking has happened, the 1 billion people. And 26th December 2023, in a French airport, 276 people, Indians, especially the Indian, was stuck over there, and they were the human, they were the trafficked by this exploitation, through the exploitation. So we can, if we can notice that in the present day, basically human trafficking is known as the slavery. The system which was abolished, we have introduced this slavery. It was the first started in Southeast Africa. Then it has come to the Eastern Europe. Afterwards, Sub-Saharan Africa. And then it has come to the Asian subcontinent like India, China, Japan, Bhutan, etc., etc. The types of exploitation, there are several types of exploitation. What are those exploitation? Number one, the bondage, the child bondage. We know that basically those who are coming from the poor society, I can say that the below poverty line, those who are living in the below poverty line,
the large family size, the parents have the 10 children, they are exploiting. How? Because they need the eradication of poverty. So they can sell their children for the very few money. At the same time, they can send their children to the working place where they are trafficked, where the children were trafficking, as by the way of bondage labor. But in this type of system, what is the root cause? As a social scientist, I can say that we have to find it out with the blaming to the others. We have to find it out what is the root cause over there. The main root cause is that the poverty. In India, 40% of people is living in below poverty line. And we have no conception about the family planning system. At the same time, we have seen lack of awareness, illiteracy, below poverty living, without facilities, the people living at the inside the forest or the forest fringe or the rural India, the people are really in jeopardy. They are not getting their proper benefit, though it is sanctioned by the government, but it is not reaching to them just because of the middlemen. When we are fingering, so we can finger it to the middlemen, those who are just spoiling the total social system of the benefit of economic benefit. So in that case, what is happening? What is happening? Human trafficking is basically becoming a organized crime. It has become the organized crime. So all over the world, people are doing for the very fact is that for the money. So they are getting money when they are converting them. For what they are doing? Just because of the poverty, they are getting money from that. Not only that, the medical side, if you can say that, there is a organ transplantation. So older trafficking, older people are trafficking also for their the organs. Those organs are transplantation from the different places. You know, there is a system nowadays. It has been observed that the IVF. In case of the IVF, when the IVF is going on, the in vitro fertilization, they couldn't implant the zygote in the mother womb. Instead of that, they can sell it in the outside of the world. So it is happening just because of the poverty orientation. So we know there is a act, TVPA, which has been implemented in 2000, the Trafficking Victim Protection Act. So we know that there is a legal formation is also there. We are aware of that. So these are going on, but we are not caring of. So one system, it has been employed, that means through the NGO. I also worked through this NGO. If we can find it out, there are several railroad platforms. It is there, the child line. There is a universal number by which number if the child trafficking is going on, if any child may missing through the railway station or wherever, if you can see that child trafficking is going on, if you can inform this number, they can take care of this child. And I know personally that they are getting one girl child. She has appeared higher secondary examination and she stood passed it out in the first division. So it is happening. The awareness is there. People know very well. There is an act. There is a legal procedure. There is everything was there. Still, it is happening. Why? Again, why? Why it is happening? We are not aware. We are educated person. There are so many people are educated. We are also know the bad effect of that. But when we are seeing, we are not accepting ourselves. What is the root cause? Why it is happening? Why migrated trafficking is happening? Just because of vote bank.
There is from if you are not pointing out to any government or anything, but the West Bengal, it has been seen that there is so many persons are coming from the Bangladesh and other parts of the India, so other parts of the outside of India, and they are getting their like this voter card, they are getting easily just because of the vote bank. These political parties are doing only for the vote bank, and when they are enriching themselves, they are giving so many votes, so many things, but after the getting the seat, they are not doing anything. But at the same time, the tribal trafficking is going on. Tribals, the dense people, the inside the forest or inside the rural area where people are not getting any kinds of benefit, so they are being trafficked. So what is happening? First, they have to convert it in different religion. Might be Christianity, might be Islamic, or might be Jews, or whatever. So the first they converted it them, then they can take them for the better living, the better perspectives, the better isolation, the better initiatives. So the people are leaving their place, but afterwards, what is happening? They are seeing that they have become a terrorist. So the condition or the after trafficking, the people realize that they have bring for the social crime. Why? That they have to kill some some person who is the enemy to the others. So this way it is happening. So but involuntary solitude and involuntary trafficking, then voluntary trafficking, then the child trafficking, then the adult trafficking, then woman trafficking, everything is going on, and everywhere we have found it out, there is a act and there is a section, subsections of the law, but we are not caring of, because the people, those who are in the trap, they don't know the what is happening. They are less aware, because they are also giving the some ideological point of view that you have to get the better opportunity. Those traffickers, they are very clever. They don't say you that the you will get so many money, you will get the bungalow, you will get the car, you will get the all facilities. So I am going to give you various types of gifts. So there is also they are affecting the people, the young ladies, and they can take them from the India and giving them telling them that you will get the better job for the recruitment, so you will be, the lady has gone. So in this way, what is our next mission? We are at this 2024. So we are taking the oath that we have to eradicate all the social problems, the social evils. So how we can control this trafficking, which is happening, which is continuing going on. So this is, we have to take the oath that we have to be more aware. So awareness generating camps should be there in each and every block. The government should take the initiative. There should not be any trafficking. Though the NGOs are working in the side of the government, on behalf of the government, they are also taking so many kinds of initiative to protect the child, protect the people at large for the betterment of the society. At the same way, each and every individual, each and every persons are responsible, and they have to take the responsibility to eradicate this trafficking and to make awareness among the people that they should not be trafficked. So no one can be denied. That means the people, those who are in the rural area, those who are in the urban area, those who are in the illiterate persons, those who are in the deep inside the forest, those the fringe of the forest, all have the way to, they deserve to live the better life. They need the better life. So if the education is not possible, they couldn't understand the people at large. So they should be educated first, they should be literate first. At the same way, those who are trafficker,
They should know that this is a illegal crime. This is a crime as such. So the moral education, the social power, the social stability should be there, so we can protect our society. We can give them the better opportunity, better living, so they would not be suffered. If they can get their benefits, if they can deserve to live the better life, that deserve to get the all facilities over there, they should not be trafficked, because the traffickers know the weak point of the people, weak point of the society. So at the point of view, so we have to give the power to the society, or the power to the people who are living in the society, because they are the fellow citizens of ours. If we can respect our fellow citizens, we cannot exploit them. No one can be exploited. So first we have to make them aware. We have to reach the proper education to the persons, those who are living. At the same time, we have to enrich them for the socio-economical aspect and for the better living aspect. Then we can protect the trafficking at large. Thank you very much. Thanks a lot. Excellent, madam. Excellent as always. Excellent as always. You means आप लोग जब बोलना शुरू करते हैं तो really mesmerizing, really mesmerizing. We are proud of you that you are joined with us. Thank you, sir. Thank you, Professor Pawan Sharma ji. Really, madam took all the sectors, whichever even left as a point by Dr. Basuji. She talked about that this is a crime. Very importantly, she talked about that this is a crime, and child missing, social crime, rural and urban, both the areas are to be either educated or the awareness awakening camps are to be arranged. This is very, very important. This is the I think the guidelines for the society. जो society की वो almost some sort of clubs हैं या दूसरे NGOs हैं, they are supposed to take lead, and repeatedly whenever it is a Lions Club or Rotarian Club Mela, there they can highlight these points, because there is a good gathering, number of educated and common men, both are there. Some sort of Dashera Mela or Diwali Mela, these are the gatherings where we can spread all these information regarding the awareness of the human trafficking. Individually, it's very difficult to contact one by one. Either the assembly time of the schools, means primary school, middle school, and the +2 level, it should also be then that one should be very careful when we are walking. Move in groups, especially for the girls or the tiny boys, child. They should move with a say 2, 3, 4 person group. Of course, there used to be the maid servants previously, say 30, 40 years back. They used to call the daughters and carry to the their vidyalaya, their schools, and afterwards it is now a cab system. Cab with a lady come, and the small kids are there, maybe of junior KG and senior KG. So things are there better as far as the urban life is concerned. But wherever there is a gathering or the group or the melas, then it is difficult. And what you people touched, that is beyond of the human thinking, that across the border or the uncovered unsafe areas, from there the persons are taken, or because of the poverty. So many points you raised, and this is a fact that the developing countries or the underdeveloped countries, they are overpopulated, or the poverty is the main factors which has been becoming the victim of all these things. So thank you so much. You touched all the areas, and I think our purpose of today's this webinar's topic is almost fulfilled, because we all made aware on this topic and can spread these things, and the person, those who will visit our videos, they can also get the knowledge information that what is happening throughout the world. Thank you so much. And over to Mr. Pawan Sharma. Namaskar. Namaskar. Now session is open for 10 minutes, sir. Then I and Kuldeep Pandey I welcome Kuldeep Pandey here. Pandey already have joined. Namaskar, sir. Namaskar. Yes. Yes. So it means we are supposed to save our time, because our gathering is that much person. Those who are having any idea, they can put questions or some suggestion. I would like to invite Dr. Professor
Nishan Shukla sir, if he is in connection with some suggestion or something which he can add on this very important topic. Professor Nishan Shukla sir, आप कुछ बताना चाहेंगे? ये हमारी जो मानवीय जिस असुरक्षा के क्रम में जो ये लापता होने का मामला और ये स्लेवरी की पूर्व वाली स्थिति के तहत कुछ लोगों का पलायन करना या पलायन कराया जाना, या दास्ता की पुरानी बेड़ियां भी अभी मौजूद हैं जो ह्यूमन की खरीद फरोख्त और अडॉप्शन के चक्कर में रहती हैं। कुछ आपके गुजरात के बॉर्डर से, कुछ और सी साइड से कुछ है, कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे? कुछ आपकी जानकारी, अनुभव? लगता है बिजी हैं वो, नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो एरिया कोस्टल एरिया है। गुरुदेव द्विवेदी जी से एक बार इस वेबिनार जी प्रणाम सर, प्रणाम सर, स्वागत है। उन्होंने जीवन देखा है, सब कुछ देखा है उन्होंने अपनी आंखों। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। ये जो स्थितियां हैं वो केवल वैश्विक होने के साथ में स्थानिक भी है, और आर्थिक दृष्टिकोण से इसका ज्यादा दुरुपयोग होता है, क्योंकि गरीब आदमी है, मजबूर है, और उनको उदर पूर्ति के लिए वृत्ति पुष्टि में अनपढ़ होने के कारण से बहुत ज्यादा इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती है, और गांवों से शहर तक में ऐसी स्थिति मिल जाती है। तो विश्व स्तर पे जो होता है, या जैसे अभी रिपोर्ट आई थी कि सब विदेश में जाते हुए पकड़े गए बिना पासपोर्ट के, तो वो वहां जाते हैं अच्छे जीवन के लिए, किंतु सबका जीवन वहां अच्छा नहीं होता। इतना ही हमको विचारना चाहिए, और अगर हम शिक्षित कर देंगे और जरूरतमंद को हम यहीं पे सुविधा देंगे, रोजगार वगैरह, या उस तरह से उसको काम देंगे, तो वो कभी भी इस रास्ते पे नहीं जाएंगे। तो दोनों तरह से, सरकारी स्तर पे भी और निजी स्तर पे भी, हमको जैसे चाइल्ड लेबर वगैरह की बात होती है उस तरह से इसको विचारना चाहिए। इतना ही कह के मैं धन्यवाद दूंगा आप लोगों को। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया, आपने सही बात कही। अब मैं एकदम मुझे याद आया